ओके, किसके लिए लिसनिंग स्ट्रेस है भाई? किसी के लिए नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा स्कोरिंग मॉड्यूल है ये, ठीक है। अगर आप इसको बर्डन समझ के ना करो तो जब आपके हेडफोन्स लग जाते हैं ना, आप करते हो ये वाला कीवर्ड मिल जाए, ये वाला कीवर्ड मिल जाए, बस उसको भी ध्यान से सुना। कॉन्वर्सेशन क्या होती है उनकी आपस में, नोटिस किया है किस पार्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? किसने किसने किया? क्या होता है फर्स्ट पार्ट में? फिलअप्स तो होते हैं। कॉन्वर्सेशन किस लिए होती है? उसका कुछ इंट्रोडक्शन होती है, कुछ चाहिए होता है, कहीं सीट चाहिए, तो उसको हम बोलते क्या है? बेसिक्स। नहीं। अच्छा, आप सब जब आए थे इंस्टीट्यूट एडमिशन लेते, सबसे पहले क्या किया था आप लोगों ने? इंक्वायरी नहीं की थी? है? नहीं की थी। एक तो हमेशा लिसनिंग को एंजॉय करके करोगे ना, कभी बोरिंग नहीं लगेगी। सिर्फ आंसर ढूंढ के लिखना मत समझा करोगे, बस आंसर सुन जाए, उसको सुना करो, ठीक है? गॉट इट? चलो, क्या है इसका मीनिंग? अपने दुश्मन को पहचानो या पता हो कि उसकी क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ्स है, ठीक है? तो लिसनिंग क्या है यहाँ पे आपका? फ्रेंड है? नहीं है, तो एनिमी है, तभी क्रैक करोगे। फ्रेंड हो तो फिर क्रैक करने की जरूरत ही क्या है? मतलब कि डीपली आपको पता हो कि आपके आगे आने क्या वाला है, ठीक है? आप किस चीज को फेस करने वाले हो, क्या कंडीशन आने वाली है। एग्जाम्स में जाते थे, बोर्ड्स के एग्जाम में, चलो ठीक है, आईएलटीएस में कोई सिलेबस नहीं होता, ठीक है, बट वहाँ पे सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते थे तो करते थे ना प्लान, इस वाले चैप्टर में से ये कर लेंगे, इस वाले चैप्टर में से ये कर लेंगे, होता ना? तो यहाँ पे नहीं करते प्लानिंग। क्यों? हो जाएगी। लिसनिंग है, बहुत इजी है ना? बट लिसनिंग को जब तक लाइटली लोगे, ठीक है, फ्रेंडली है, सबसे स्कोरिंग है, बट स्कोरिंग है इसका मतलब ये नहीं लाइटली लेके छोड़ दोगे, हो जाएगी, ठीक है? अगर स्कोरिंग है तो उस पर हार्ड वर्क करोगे तभी उसमें स्कोर आएगा, ठीक है ना? चलो, नो योर एनिमी मीन्स आपको पता तो हो हर पार्ट में आने क्या वाला है। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, अभी बोल के अरे ओके, पार्ट 2 हाँ, वो तो क्वेश्चन टाइप होगी हमारी, होता क्या उसमें? कॉन्वर्सेशन तो लिसनिंग में चल ही रहती है, वो तो हर पार्ट में होगी, किस रिगार्डिंग होती है? बोलो बोलो, नोटिस ही नहीं किया, हमेशा बस कीवर्ड ढूंढो, ये वर्ड बोल दिया तो आंसर मिल जाएगा। प्रॉब्लम रिलेटेड, डिबेट, मोर आंसर्स, इसके अलावा डिस्कशन, ठीक है? आगे मोस्टली तो जो फर्स्ट पार्ट इंक्वायरी होता है उसी को आगे इंक्वायरी होगी, मेरे से इंक्वायरी लेके चले जाते हो, आगे क्या लेने आते हो? डेमो नहीं लेते, बिना डेमो की एडमिशन करवा लेते, इतना देहवान तो कोई नहीं होता है, बिना डेमो लिए एडमिशन करवा देगा, नहीं होते हैं हमारे पास में। ठीक है, चलो, फिर आपको ये रूम इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, ठीक है? फिर आपको एंड में हम लेके जाते हैं लिसनिंग वाले रूम में, नहीं? तो वो क्या होती है, कॉलेजेस में जाते हो, ओरिएंटेशन नहीं देते हो आपको, यहाँ पे ये रूम है, यहाँ पे ये रूम है,
ऑफर लेटर्स आती हैं, सुना होगा सबकी, तो उस पर लिखा होता है ओरिएंटेशन इस दिन है। तो कभी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे ओरिएंटेशन पे क्या होता है? वो पूरे कॉलेज का दिखाते हैं, यहाँ पे ये ग्राउंड है, यहाँ पे ये रूम है, आपकी यहाँ से यहाँ लगेगी, होता है ना? यही होता है। जो आपका पार्ट 2 है वो आपकी इंट्रोडक्शन या फिर ओरिएंटेशन होती है। किसकी? किसी कंपनी की। इसकी शुरुआत तब हुई थी, फिर इसने ये करना शुरू किया, फिर ये मैन्युफैक्चर करने लग गई, फिर इस बिल्डिंग को बदल दिया, फिर ये स्कूल बन गया। यही चीजें बताते हैं एमसीक्यूज आप जब करते हो पार्ट 2 के, यही चीजें बताते हैं ना वो। जब आप कहते हैं इसने तो सारा कुछ बोल दिया, तो वो उसमें बता रहा होता है। तो स्टार्ट इस ईयर में हुई थी, इस ईयर में ये होना शुरू हो गया, होता है ना? क्या होती है? ओरिएंटेशन होती है, इंट्रोडक्शन होती है कंपनी इंस्टीट्यूशन की किसी। ऑर्गेनाइजेशन की। डन। पार्ट 2 तक क्लियर है? पार्ट 3 नोटिस किया होगा यार, इतनी बार तो लिसनिंग करते हैं, सबका फेवरेट मॉड्यूल होता है। मैथ तो आता है, क्यों आता है? मैथ हमेशा पार्ट 2 में आता है जब ओरिएंटेशन चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो बताते हैं कि यहाँ पे आपका ये है, आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ से यहाँ जाओगे, आपकी ये वाली क्लास लगेगी। यही होता है, वो तो पार्ट 2 में आता है। पार्ट 3 में जल्दी जल्दी बोलो भाई, हैं? वो तो क्वेश्चन टाइप है। या डिस्कशन होती है, कभी कभी 2 स्टूडेंट्स की आपस में, फर्दर उनमें कोई टीचर ऐड ऑन हो जाता है, ऐसे ही होता है। किसी 2 लोगों की पहले डिस्कशन चल रही होती है, फिर कोई थर्ड पर्सन ऐड ऑन हो जाता है, फिर हम उसकी ओपिनियन सुनने लगते हैं। यही होता है। ये पता मैं क्यों करवा रही हूँ, ताकि आपको पता लगे कि हमेशा आप स्ट्रेस लेके किसी चीज़ को करो ना, उसका मतलब यही नहीं होता कि बस स्ट्रेस ले लिया, इसमें मार्क्स लेने हैं, ले लिए, बात खत्म। मूवी देखते हो ना, मज़ा आता है। वहाँ पे क्या चलती, बातें चलती, डायलॉग भी चलते, स्ट्रेस नहीं ना होता माइंड में आंसर ढूंढना है। वो फन लेके करते हो, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? कर सकते हो, इसमें भी ऐसा स्टोरी होती है एक तरह से, विदाउट विजुअल है, बट फिर भी पॉडकास्ट भी तो सुनते हो मुझे, आप लोग कुछ लोग नहीं सुनते। चलो वो भी डिस्कस करेंगे आगे। पार्ट 3 हो गया डिस्कशन। पार्ट 4 ये तो सबसे इजी है। पार्ट 4 लेक्चर। ब्लैंक्स तो मुझे भी पता है, क्वेश्चन टाइप भी पूछ ली। पार्ट 4 लेक्चर, ठीक है? चलो, सिलेबस होता है कोई लिसनिंग का? बड़े बच्चे पूछते हैं मैम जो यहाँ पे की है क्या वो पेपर में आ सकती है? नहीं आ सकती, ठीक है? सिलेबस नहीं होता, इसीलिए एक कन्फाइंड एरिया में रह के नहीं, बस ये आज करनी बहुत है, लिसनिंग ही करनी बहुत है, नहीं, ठीक है ना? एक्सप्लोर करो, जरूरी नहीं सिर्फ यही वाली लिसनिंग सुन के आपने जो है अपनी ग्रिप बनानी। पॉडकास्ट सुनो, मूवीज देखो इंग्लिश में, ठीक है? क्योंकि सेम वर्ड्स तो हर बार वो लिसनिंग में यूज करेंगे नहीं, तो कोई बाहर का भी तो वर्ड आ सकता है, तो उसको भी बता सकते, है ना? चलो, बोर हो गए, मुझे पता लग रहा है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, क्या होती है लिसनिंग की सबसे स्कोरिंग? ब्लैंक्स। कौन कौन से पार्ट में आती है?
पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन होते हैं? पार्ट 4 में 10 आ जाएंगे। राउंड ऑफ लेके चलते हैं 17 18 आ जाएंगे, सारे तो नहीं गलत करोगे, ठीक है। राउंड ऑफ 15 भी लेके चलते हैं। चाहिए कितने हो गए? 20 चाहिए, क्यों? 40 में से कितने चाहिए? 30 चाहिए। और मिनिमम कितने चाहिए? ये टफ से टफ लिसनिंग भी आ गई, 27 24 सबका अलग अलग, ठीक है। बट मिनिमम फिर भी हमें लिसनिंग में क्रैक करने के लिए 23 तो चाहिए, ताकि 6 तो आए, है ना। चलो, अच्छी किस्मत होगी 20 में से 20 आ जाएंगे, बाकी के जो 20 बचे उसमें से 3-4 ठीक कर लेना। नहीं, ये भी नहीं लेके चलना होता माइंड में। एटलीस्ट 30 अपना रखोगे टारगेट, तब जाके कहीं उसको सारा अटेम्प्ट करोगे, आएंगे 23 प्लस कि नहीं। 5.5 ही लैने का तो फायदा नहीं, फिर वो यूके वाले हर बार वीजा थोड़ी दे देंगे, ठीक है। MCQ मैच इन्फॉर्मेशन सारे आ जाएंगे। MCQ किस तरह के होते हैं? एक ही टाइप के होते हैं। और मैं कुछ पूछ रही हूँ, पूछना कितने टाइप के MCQ होते हैं? MCQ स्लैंग्स बोलो बोलो। सिंगल आंसर, मल्टीपल आंसर, मैं वो तो पता सी नहीं तो बोलेगी। सिंगल आंसर की करना होता है। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर जे आपका कर रहे हैं सिंगल आंसर वाले MCQ? 3, ठीक है। मल्टीपल आंसर 5 to 6, and how many you have to choose? 2 or 3, right? Okay, शुरू करिए कि गल्ला मारिए? कर लिए? नहीं, पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें कि मैं शुरू कर रही एक तो गलती करते हो सीधा ही, बस मार्किंग शुरू करते इंस्ट्रक्शन रीड की नहीं की है की नहीं, बस कीवर्ड अंडरलाइन कर लो, हो गया। ये बोलना तो ये आंसर है। चलो, इंस्ट्रक्शंस की करना चाहिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। उस तो पहला मतलब वर्ड लिमिट। एग्जाम च गए मॉक टेस्ट होंदा ना, कुछ तो बिल्कुल सीरियस नहीं लेंदे मॉक टेस्ट ਨੂੰ। मैं देखिया नॉर्मल डे वाली क्लास है, हो गया टेस्ट दे के गए, जल्दी छुट्टी हो गई, वाह मजा आ गया है। चलो सपोज मॉक टेस्ट नहीं है, एग्जाम है। सब तो पहला मॉड्यूल लिसनिंग है, सब तो इजी तो सब तो पहले आ गया। फिर नर्वसनेस तो होंगी जिन्होंने फर्स्ट एग्जाम लेना है ना, जिन्होंने पहले दिता हुआ उन्होंने तो पता ही है कि होना है ना। जे आर होना है आर हो जाएगी, नहीं तो पार, ठीक है। चलो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, means ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਲੀ ਆਏ ਹੋ, ਵੀਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੈਮ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਪਤਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਪਲੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆਨਸਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਰਵਸਨੈਸ ਹੈ, एग्जाम है, असी सुनना है, फर्स्ट आंसर निकल गया, पता ही नहीं लगा, पैनिक हो गए, ट्रैक गया कि हम कितने पहुंच गया, कि बोल रहा कुछ नहीं पता, कोई चीज़ नहीं करनी। क्लास भी तो वही सब करते हो, इन्ना फ्री माइंड लैके करते हो कि हाँ बोलेगा असी आंसर लिखने, फिर उत्थे जाके कि वो ये चीज़ गलती करनी। सब तो पहली कि लिसनिंग सब तो स्कोरिंग है, तो वो चीज बेड़ा रुक जाना है। इस करके सब तो पहले इंस्ट्रक्शन कदे भी पैनिक नहीं होना, उन्हें वही चीज़ वही इंस्ट्रक्शन बोलते रहना है जिहड़ियां तुसीं इत्थे करदे हो। इस करके माइंड रखना है लिसनिंग वाली, ठीक है, क्योंकि सब तो पहले स्ट्रेस ही सब नूं हुंदा है, लिसनिंग शुरू होगी अगे एग्जाम की होएगा। सो जेड़े बाद चों मॉड्यूल होने वो हो ही जाएंगे, लिसनिंग वाल पक्का फोकस करके बैठना, आराम नाल सुनना की कह रहे हैं, ठीक है। देन कितनी बारी वो कहते हैं अपने प्रीवियस आंसर्स रीड कर लो, है ना, अपने आने वाले क्वेश्चंस रीड कर लो, दोनों अपनी अपनी जगह यूज करने चाहिए, है ना। पिछले आंसर्स हो गए आप रीड कर ले, टाइम वेस्ट। पिछले आंसर जे आप रीड कर ले हैं वो 10 to 30 सेकंड्स का जो टाइम पीरियड आया है, जे मान लो तुहानू डाउट हो गया ये आंसर मैनू लग रहा है ये नहीं ये सी, ठीक है, दोबारा लिसनिंग सुन सकते हैं, ऑप्शन ही नहीं है। सो फायदा वो 10 तो 30 सेकंड वेस्ट करने का यूटिलाइज किवें हो सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करके, ठीक है। हमेशा तुसी कहते हो मैम वो जो लंबे वाले MCQs आते हैं ना वो इन्ना सारा लिखे होंगे जिन्ने वो टाइम च आप रीड ही नहीं कर पाते जो दिंदे हैं। सो हमेशा जो MCQs आते हैं लास्ट जो निकल गया सैक्शन उस तो बाद उन्होंने जो टाइम दिता कि अपने पिछले आंसर जोड़े है तुसी की कर लो, रिवाइज कर लो, रीड कर लो, वटएवर, ठीक है ना करियो। एक तो कन्फ्यूज होवोगे, फिर नैक्सट सैक्शन के यही लगी जाना यार वो आंसर ये सी करते इतने भी वो आंसर वो सी लिखता छाड़ दो, ठीक है। जरा वो टाइम मिल रहा है कि पिछला रीड कर लो तो की करना नैक्सट क्वेश्चन रीड करने हैं, फिर उस तो बाद जो उन्होंने टाइम देना है कि नैक्सट क्वेश्चन रीड कर लो, फर्दर अपने जड़े भी होते तो रह जाते हैं MCQs नीचे वाले, क्योंकि सारे तो पढ़ नहीं होंगे, वो पढ़ लो, ठीक है। माइनर मतलब छोटी छोटी चीज़ों, ठीक है। मैं इसे का आंसर मैं क्रॉस करता आंसर की है, मैं मेरे करके क्रॉस करता नंबर दे दो, इन्हें तो हो ही सकता है, इन्हें तो मैनेज हो सकता है, ऐसे लिखे नंबर दे दो, नहीं मिल रहा, सब तो बड़ी गलती ये करते हैं। कई बार उन्हें प्लूरल क्या होता है तो असं लिख रहे सिंगुलर, सिंगुलर क्या होता लिख रहे प्लूरल, आंसर भावें सही ना नंबर नहीं मिलता, ठीक है। इस करके कंसंट्रेशन रखनी है, उन्हें जो आंसर बोलिया प्लूरल बोलिया, एस वाला बोलिया कि बिना एस वाला बोलिया, ठीक है। मैम ये चीज़ा पता ना दसो बोल कर रहे हो कि कितने माइंड च आ रहा है पता सब नूं होंदियां, बट जब आप करन बैठते हैं ना भुल जाते हैं, होंदा कि नहीं होंदा। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰਸ नहीं मिल रहे ना ਮੈਨੂੰ साफ पता लग रहा है कि ਤੁਸੀਂ बोलोगे। चल फिर नहीं आ रही, एक और गलती कर रहे हो, किवें बनया होंदा ऐदा बनया होंदा ना कुछ
आंसर बोलता है 150 पाउंड्स नाल लिखिया होंदा मैं की कर देनी आंसर क्यों क्योंकि उन्हें ऑलरेडी दा साइन पाया होया ठीक है जब साइन ऑलरेडी पाया होया क्यों अपना टाइम वेस्ट करते ना बैंड आने हैं ना नंबर मिलने हैं टाइम भी नहीं यूटिलाइज होना ठीक है ग्रामर कर लिए थोड़ी जी लिसनिंग दे विच मैम कितनी यूटिलाइज होंदी लिसनिंग दे विच ग्रामर होंदी नहीं होंदी ना नहीं होंदी उन्हें तो सिर मारेगा सी नहीं होंदी ए वर्ड्स देखे होने ऑन एड इन आंदे ना कितनी बार ठीक है हम देखो जेड़ा ऑन है ना वो सिर्फ डेट या डेट दे लगा होंदा नोटिस कीता कदे नहीं कीता तां ही आपां लिखिया होंदा ऑन की लिख देने आ बोलो प्लेस बहुत गलतियां कर रहे हैं माइनर जिदे करके बैंड्स की है नहीं मिलते ठीक है इस करके इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जरा ऑन है वो डेट और डे उस तो बाद एट प्लेसेस कॉमन जी गल है छो आपा ये दो वर्ड्स नेचुरल टाइम मैन मेड टाइम चलो दौड़ाओ दिमाग में कोई क्या डिफरेंस है दोनों च मैन मेड टाइम बोलो सवेरे शामी नेचुरल टाइम सूरज यस घड़ी चलती है मैन मेड टाइम यस पता लगा डिफरेंस नेचुरल की है इवनिंग मॉर्निंग डॉन डस्क मैन मेड 2:30 1:30 11:30 ठीक है सो जेड़ा एट है नेचुरल टाइम या फिर मैन मेड टाइम प्लस प्लेसेस इन इंच की है कोई भी जगह वेन्यू ठीक है स्कूल ठीक है ट्रैवलिंग इन कार कुछ भी ए दोनों नहीं है एक छोटी सी और इंस्ट्रक्शन जो मल्टीपल आंसर ਤੁਹਾਡੇ MCQ आंदे हैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹ ਨੀਡਰ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ आप चेक कर देना ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਅਪ ਕਰਤਾ ਮੈਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਨਸਰ ਮੈਂ ਨੀਡਰ ਆਰਡਰ ਚ ਸੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਟ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ गड़बड़ करोगे ठीक है सो कई बार की होंगे उत्थे एग्जामिनर को ना शीट्स ते आंसर लिखे होंगे और कई बार मेंशन नहीं होता कि एक क्वेश्चन जेडे 3 तो 4 ने रनिंग ऑर्डर या ईगर ऑर्डर से उस केस दे विच हमेशा की करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे विच ए ऑप्शन है बी है सी है डी है ई है आंसर ई है बाद में लगा बी है ए बी नहीं लिखना बी लिखना है ठीक है बाद जो टाइम मिलना ना 10 मिनट्स इतने ज़्यादा वो इनके लिए यूज़ करना है ठीक है मुझे एनी ऑर्डर आया फिर कुछ जे एनी ऑर्डर मेंशन वो होगा चाहे एनी ऑर्डर है इधर ऑर्डर है इन द एंड ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਮਾਰਕਸਾਂ ਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ 25 to 28 ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ऑर्डर वाइज ही लिखने हैं ठीक है
दो तीन और इंस्ट्रक्शंस दसनियां मैं, ठीक है? सोना जाना सब तो ज्यादा औखे लगते हैं ना। कुछ भी क्वेश्चन लिखे अपने ऑप्शन होंगे, ठीक है? आप फटाफट ए वर्ड डी वर्ड है, ए वर्ड डी वर्ड है, ए मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। वो बोलता सारा ही देता है, तुसी कहंदे नाम होता तो सारा कुछ ही बोलता सी हुंदा ना। किसी वारी मेरे को ले हुंदी ना, मैं बोलता सारा कुछ ही दिंदे हैं। करियो हैंड रेज सब दिए मैं क्या आंसर तो बहुत बार ज्यादा कर करता हूं। कितने कहता मतलब जी बोलना थोड़ा तो मतलब ज्यादा क्वेश्चन लेवल ए वाली ट्रिक्स ते ना जाना दो कि ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ मैं वो पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, मतलब ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵਰਡਸ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਮ ਵਰਡ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? कितनी ना हमने सामने करवाई सी पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀਵਰਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਰੁਣ ਸਰ? ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਂਸੀ ਮੈਮ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਨਸਿਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ? ਬਲੈਕ ਮਾਰਕਰ। ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ब्लैक मार्कर। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? Understand the demand of the question and never rely on paraphrasing. अपने जड़े keywords, never rely on keywords क्योंकि the sentence will always be paraphrased. ठीक है? मैम पंजाबी से दस्यो की बोल रहे हो? हैगा कोई? नहीं? चलो बढ़िया। ठीक है, हो गया? Paired. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼? ਕੀ ਪੋਇਮ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੋਰੀ ਲਲਬਾਈ ठीक है। Part 1 always 10 blanks. Instruction कि हम दिए बैठिए नवे नवे स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ मैं आंसर किਵੇਂ हो सकता उन्होंने तो याद ना किया कि नंबर लिखो या वर्ड लिखो। सो
ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਹੁੰਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਔਰ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਸੇਮ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 1979 ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦਾ क्रॉस क्यों कितना इंस्ट्रक्शन भी है वन वर्ड और या फिर एंड अ नंबर नंबर आ गया वर्ड आ गया ये एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा चीज को कदे नहीं एक्सेप्ट करते ठीक है ना बहुत कॉमन सी चीज है मैं सारा लिखन बैठूंगी बहुत लंबा चला जाएगा नॉर्मल जी वोकैबुलरी होती है नॉर्मल जी ठीक है जिवें पेमेंट है बाय चेक क्रेडिट कार्ड कैश यही चीज़ां होंगी हाउस टाइप है हाउस फ्लैट हाउस फ्लैट डोम कि तो नहीं पता कि होता है होम स्टे स्टूडेंट हॉस्टल की होता है यार तुसी सामने ते बाहर जाना है कोई रिसर्च नहीं करते YouTube ते नहीं देखते ये कॉलेज है ये कॉलेज भी डॉर्मेटरी कितना नहीं है क्योंकि सारे ने तो बाहर रेंट देना होता है कंपटीशन ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਸਟਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਰੂਮਸ ਨੂੰ ਡੋਮਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਈਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सिनोनिम्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇੰਡੀਅਨ ਵਰਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਟਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अगर देखो बुक टाइप होगी या नॉवल बोलेंगे मैगजीन न्यूज़पेपर फिक्शन नॉन फिक्शन जर्नल रेफरेंस बुक ठीक है सो इदा की जी नॉलेज है ना वोकैबुलरी वाली ये अपनी कितों ना कितने इकट्ठी कर दे रहा करो ठीक है अपना ही लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग कितने बच्चों ने आज तक ये आपस इंटर रिलेटेड होंगे किस वे च होंगे सिलेबस तो है नहीं कोई इंटर रिलेटेड किवें हो सकते वोकैबुलरी रीडिंग च देखते हो कितने सारे फॉर्मल ऐसे वर्ड होंगे हैं तुसी कहते मैम ये वर्ड का मीनिंग नहीं पता लगा तो पता नहीं लगा आंसर की लिखे होंदी है ना ये चीज़ सो कदे ट्राई किया नहीं बस वन आवर दे विच आपां नूं की लगा रहिंदा कि आपां बस क्वेश्चन दे आंसर लभ लईए इसे करके ਇੰਜੋਏ ਵਾਲੇ ਵੇਚ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਐਕਸਪਲੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਰੂਲਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं सेविंग अकाउंट चेकिंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट ठीक है लिस्ट बहुत लंबी है जो कहूँगे थोड़ा थोड़ा शब्द दस देने हैं अदरवाइज आप लिसनिंग शुरू करते हैं दसो दस दो मेजॉरिटी दसन चाहिए कि लिसनिंग करवान चाहिए दस दो चलो
जो जो याद रहा ठीक है, बाकी सुन लो। आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट, जो भी वो आईडी की गल करते हैं, पासपोर्ट, लाइसेंस, स्टूडेंट कार्ड, बुक टाइप की आ जाती है, नॉन फिक्शन, जनरल, रेफरेंस बुक मैंने दसिया सीगा मैं, रूल्स आ जाते हैं, किहड़े रूल्स, ड्यू डेट कदों है, लोन पीरियड कद तक चलेगा, फाइन या फिर रीन्यू आ बुक कदों तक तुम रीन्यू करा सकते हो जब किसी लाइब्रेरी की चल रही है कॉन्वर्सेशन, ठीक है। बैंक अकाउंट भी हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया जिमें कि विड्रॉ मनी, ट्रांसफर मनी, बैंकिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, डिपॉजिट मनी, ओपन, सस्पेंड, एक्टिवेट एन अकाउंट, इदा दी चीज़ां। हुण कई बार वो इन्फॉर्मेशन मंगते हैं कि मंगते हैं बिलिंग एड्रैस की है, फोन नंबर दे दो, बैंक स्टेटमेंट दे दो, बोलते हैं ना फोन नंबर कितनी बारी। फ्लाइट जे बुक करवानी होवे, इस दिन डिपार्चर करेगी, ठीक है, डिपार्टिंग डेट की है, रिटर्निंग डेट की है, फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, हुंदियां ना ही चीज़ां। टिकट केड़ी टाइप की है, वन वे, राउंड ट्रिप, मल्टी डेस्टिनेशन, नॉन स्टॉप फ्लाइट, ठीक है। बहुत सी ऐसी नॉलेज है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਨਸਰ ਵੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਹੋਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਡੈਂਟਲ, ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਵਰਡ, ਕਵਰੇਜ, ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਮੰਥਲੀ, ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ, ਐਨੂਅਲੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਫ ਈਅਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ, ठीक है। यही चीज़ा कि नॉलेज होवे, मान लो आंसर अपना 1 ईयर है, तुसी ध्यान नाल सुनिया नहीं, उन्हें हाफ ईयरली किस चीज़ लिए किया तो 1 ईयर तुहाडे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है, ठीक है। इस करके नॉलेज रखा करो हर चीज़। 6 मंथ्स बोलिया हाफ ईयरली आ सकता, हाफ ईयरली बोलिया 6 मंथ्स आ सकता, अपनी डिमांड देखा करो कि कितनी वर्ड लिमिट मांग रहे हैं, ओके। कुछ नॉर्मल जी चीज़ा, मंथ, सीजन, शेप्स, ट्रांसपोर्टेशन, कलर्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, थोड़े बहुत जेडे आंसर्स होंगे अपने कई बार पार्ट 1 दे विच, ठीक है। सिटी, स्ट्रीट, लेन, सिटी सेंटर, सेंट्रल स्टेशन, मेजरली मैप दे विच जदों आंदे हैं। चलो हुण आपां ज़्यादा देर नहीं करनी, पेज नंबर खोलो 10, बुक विच पेज नंबर 10, सेक्शन 1। हुण आपां की कहण लग गए पार्ट 1। Disconnected. Here. चिल्ड्रंस इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ठीक है। और मैं लिसनिंग शुरू करूँगी। सब तो पहला काम किया ਤੁਹਾਡਾ, मैं लिसनिंग शुरू कर रही हूँ। सब तो पहला काम ये है वर्ड लिमिट, ठीक है। देख ली ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ क्वेश्चन रीड कर लो, इतना टाइम मिलेगा। IELTS 16 नॉर्मल जिमें करते हो उदा ही करनी है, जितने पॉज करना होएगा मैं कर दूंगी, मैं दस दूंगी अगे ये चीज़ इदा सी, ये चीज़ इदा सी, ठीक है। चलो बुक्स पे जिन्हें भी लिखना है थोड़ा लाइट लिखो। IELTS 16 Published by Cambridge University Press and Cambridge Assessment English 2021. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a man phoning to find out about some children's engineering workshops.
First, you have some time to look at questions 1 to 3. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 1 2 3 Now listen carefully and answer questions 1 to 3. ਦੇਖ ਲੈ 1 2 3 ਫਸਟ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ठीक है क्रिएट ए कवर फॉर एन ब्लैंक ठीक है सेकंड की हो सकता है सिनोनिम लॉन्गेस्ट हाईएस्ट बिगेस्ट अभी किया थर्ड की लगा ब्लैंक पे अगे फर्स्ट हो गए सिनोनिम की हो सकते हैं है ना ठीक है क्वेश्चन रीड कर ले समझ आ गया प्ले करा Hello, children's engineering workshops. Oh, hello. I wanted some information about the workshops in the school holidays. Sure. I have 2 daughters who are interested. The younger one's Lydia. She's 4. Do you take children as young as that? Yes, our tiny engineers workshop is for 4 to 5-year-olds. What sorts of activities do they do? All sorts. For example, they work together to design a special cover that goes round an egg, so that when it's inside, they can drop it from a height and it doesn't break. Well, sometimes it does break, but that's part of the fun. Right. And Lydia loves building things. Is there any opportunity for her to do that? Well, they have a competition to see who can make the highest tower. You'd be amazed how high they can go. Right. But they're learning all the time as well as having fun. For example, one thing we do is to design and build a car that's attached to a balloon, and the force of the air in that actually powers the car and makes it move along. They go really fast too. Okay, well, all this sounds perfect. किधर आंसर है कि नहीं है सबका है सेकंड थर्ड क्यों है आंसर से सिर्फ सिनोनिम्स पे फोकस किया सी कि कीवर्ड्स पे दोनों एंड रीडिंग करवाई है ना ट्रिक वो लिसनिंग भी वर्क करती है ठीक है कार दे के ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ कार मेक ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ बिल टॉलेस्ट ठीक है इतना ही हमेशा सिनोनिम से देखो ठीक है कीवर्ड्स ने बट जरूरी नहीं हर बार सेम बोलना है ठीक है सिनोनिम्स नेक्स्ट प्ले कर रही हैं सारे कर लेने हैं फिर डिस्कस करांगे इस बारी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ सिनोनिम्स ने जो भी ये मैं पहले दसिया खुद ट्राई करना ठीक है करना रेडी Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Now, Carly,
that's my older daughter, has just had her 7th birthday. So presumably she'd be in a different group. Yes, she'd be in the junior engineers. That's for children from 6 to 8. And do they do the same sorts of activities? Some are the same, but a bit more advanced. So they work out how to build model vehicles, things like cars and trucks, but also how to construct animals using the same sorts of material and technique. And then they learn how they can program them and make them move. So they learn a bit of coding. They do. They pick it up really quickly. We're there to help if they need it, but they learn from one another too. Right. And do they have competitions too? Yes. With the junior engineers, it's to use recycled materials like card and wood to build a bridge. And the longest one gets a prize. That sounds fun. I wouldn't mind doing that myself. Then they have something a bit different, which is to think up an idea for a 5-minute movie and then film it, using special animation software. You'd be amazed what they come up with. And of course, that's something they can put on their phone and take home to show all their friends. Exactly. And then they also build a robot in the shape of a human, and they decorate it and program it so that it can move its arms and legs. Perfect. So, is it the same price as the tiny engineers? It's just a bit more. £50 for the 5 weeks. And are classes on a Monday too? They used to be, but we found it didn't give our staff enough time to clear up after the first workshop, so we moved them to Wednesdays. The classes are held in the morning from 10 to 11. Okay. That's better for me, actually. And what about the location? Where exactly are the workshops held? They're in building 10A. There's a big sign on the door, you can't miss it, and that's in Fradston Industrial Estate. Sorry. Fradston. That's F-R-A-D-S-T-O-N-E. And that's in Grassford, isn't it? Yes, up past the station. And will I have any parking problems there? No, there's always plenty available. So, would you like to enroll Lydia and Carly now? Okay. So, can I have your phone? Fourth, normally ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿਸਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ Bridge. yes next movie क्यों है आंसर ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ Film. 5 ठीक है 7 Wednesday ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਮੰਡੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ yet but however ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ whether it is your reading part or listening part ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਾਲੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 9 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੀ ਦੱਸੀ ਸੀ 10 ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ plenty of ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ there is plenty of it ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ नेक्स्ट पेज नंबर ओपन करो 33 फेवरेट क्वेश्चन आगे सबसे
है ना 33 पेज नंबर पहला स्टेप की है पार्ट 2 का पार्ट 2 पहला स्टेप की है इंस्ट्रक्शन का की करोगे डिमांड ऑफ क्वेश्चन ठीक है ना Dartfield House School used to be meaning इसलिए past used to be बोलो पास्ट हैबिट शो कर दे आप यूज्ड टू लिख के या दस के या देख के मीन्स कि पास्ट विच कोई चीज इदां हुंदी सी है ना सो यूज्ड टू बी सो जो डार्टफील्ड हाउस स्कूल है वो पहले क्या हुंदा सी हुण तो पता ही है स्कूल है ठीक है एक ऑप्शन हमेशा ऐसा होएगा जो कंट्रास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ठीक है कंट्रास्ट ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ जे मैं प्ले करा फर्स्ट क्वेश्चन अपना रीड कर लो ओदे ऑप्शंस भी रीड कर लो फिर एक्सप्लेन कर दिया किਵੇਂ ठीक है Part 2. We'll hear a head teacher talking to parents of pupils about changes at the school. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good morning, and thank you for coming here today. I'd like to bring you up to date with changes in the school that will affect your children. As you know, the school buildings date from various times, some from the 1970s, some from the last 5 years, and of course, Dartfield House is over a century old. It was commissioned by a businessman, Neville Richards, and intended as his family home, but he died before it was completed. Intended family home, but he died before it was completed. ठीक है कॉन्ट्रास्ट है पूरा पूरा बिल्कुल नहीं मैच कर रहा प्राइवेट होम क्योंकि ਉਹਦੀ डेथ हो गई पानी नहीं पाया आगे एक ऑप्शन हमेशा ऐसा ही एलिमिनेट हो जाएगा सीधा सीधा 50-50 आएगी ठीक है और सुनो His heir chose to sell it to the local council, who turned it into offices. A later plan to convert it into a tourist information centre didn't come about through luck. A tourist information center didn't come about निकल गया वो कह रहा है कि used to be a tourist information center but वो कह रहे होया ही नहीं चीज एलिमिनेट हो गया लोकल काउंसिल बिल्डिंग कितने बोले आपने Of money, and intended as his family home, but he died before it was completed. His heir chose to sell it to the local council, who turned it into offices. sell it to the local council who turned it into offices की होया आंसर थोड़ा आइडिया मिले क्लियरेंस हुई अगले करो अगले सारे अपने आप करने हैं टाइम निकल चुका है वो वाला पीरियड जब वो बोल रही है कि 11 to 15 रीड कर लो सो फटाफट रीड करो फिर मैं शुरू कर दिया
Done? Everyone? कोई रह गया होवे? May I play the audio? Later plan to convert it into a tourist information centre didn't come about through lack of money, and instead it formed the nucleus of this school when it opened 40 years ago. The school has grown as the local population has increased, and I can now give you some news about the lower school site, which is separated from the main site by a road. Planning permission has been granted for development of both sites. The lower school will move to new buildings that will be constructed on the main site. Developers will construct houses on the existing lower school site. Work on the new school buildings should start within the next few months. A more imminent change concerns the catering facilities and the canteen. The canteen is always very busy throughout the lunch period. In fact, it's often full to capacity because a lot of our pupils like the food that's on offer there. But there's only one serving point, so most pupils have to wait a considerable time to be served. This is obviously unsatisfactory, as they may have hardly finished their lunch before afternoon lessons start. So, we've had a new food hall built, and this will come into use next week. It'll have several serving areas, and I'll give you more details about those in a minute. But one thing we ask you to do to help in the smooth running of the food hall is to discuss with your children each morning which type of food they want to eat that day, so they can go straight to the relevant serving point. There won't be any junk food. Everything on offer will be healthy, and there's no change to the current system of paying for lunches by topping up your child's electronic payment card online. You may be wondering what will happen to the old canteen. We'll still have tables and chairs in there, and pupils can eat food from the food hall or lunch they've brought from home. Eventually, we may use part of the canteen for storage, but first, we'll see how many pupils go in there at lunchtime. Done? 12. Answer. C. सारे सी बी कौन कौन कह रहे हैं वाई बी questions demand was about lower school ठीक है एक ही प्लान किया गया लोअर स्कूल के रिगार्डिंग ए ऑप्शन कितने बारे हैं All buildings. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कंसिडर होएगा एलिमिनेट हो गया सेकंड विल बी यूज्ड फॉर न्यू होम्स ठीक है सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ additional school buildings will be constructed on the lower school site दोबारा सुनिए फर्स्ट वाला काट के ਤੁਹਾਡਾ आंसर है बी और सी है ना It opened 40 years ago. Imminent change concerns the catering facility, and instead it formed the nucleus of this school when it opened 40 years ago. The school has grown as the local population has increased, and I can now give you some news about the lower school site, which is separated from the main site by a road. Planning permission has been granted for development of both sites. The lower school will move to new buildings
that will be constructed on the main site. Developers will construct houses on the Developers will construct houses. ठीक है? क्या आंसर? Got it? Next. ठीक है. 14th. 15th. किधर नहीं सी है आंसर्स? एक्सप्लेन कीते जान. ठीक है. The catering has been changed because of. ठीक है. existing lower school site. Work on the new school buildings should start within the next few months. A more imminent change concerns the catering facilities and the canteen. The canteen is always very busy throughout the lunch period. In fact, it's often full to capacity because a lot of our pupils like the food that's on offer there. But there's only one serving point. So most pupils उन्हें बोलिया like the food that we serve. C वाला क्या हो गया? सीधे सीधे एलिमिनेट, क्योंकि वो तो कह रहे डिससेटिस्फैक्शन है मेन्यू के रिगार्डिंग, बट वो तो कह रही है कि सारे खुश में. ठीक है, सीधा सीधा चले गया. have to wait a considerable time to be served. This is obviously unsatisfactory, as they may have hardly finished their lunch before afternoon lessons start. So, we've had a new food hall built, and this will come into use next week. जेड़ा आंसर है ना वो पहले ही बोल चुकी है, जो मैं रोकिया सी ना उसको पहले. ठीक है, बट मैं नेक्स्ट क्यों चलाई कि थोड़ा डिफरेंस पता लगे. उन्हें की क्या उन्हें स्कूल टाइम की गल की कि उन्हों का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है बट लंच नहीं कर सकते. इत्थे किते भी उन्हें मेंशन किया कि जेड़ा स्कूल का शेड्यूल है वो चेंज किया जाएगा, टाइम टेबल चेंज किया जाएगा. की हो गया? एलिमिनेट. की बचा? जो पहले ही बोल चुकी थी. ठीक है. नेक्स्ट, पेरेंट्स आर आस्क्ड टू. ठीक है, ऑप्शंस रीड करो पहले नीचे वाले. कर ले. We'll have several serving areas, and I'll give you more details about those in a minute. But one thing we ask you to do to help in the smooth running of the food hall is to discuss with your children each morning which type of food they want to eat that day. So, आंसर आया? कौन कह रहे नहीं है? किया है, पूरी पूरी लाइन मैच की है. कि मैं कर सकते हैं हेल्प देयर चिल्ड्रन टू डिसाइड इन एडवांस. they can go straight to the relevant serving point. There won't be any junk food. Everything on offer will be. वो लोग कह रहे हैं देयर विल बी नो जंक फूड ऑफर्ड. ठीक है, एवरीथिंग विल बी हेल्दी. लास्ट जेड़ा है फिर इस केस च एडवाइस करने की तो लोड ही नहीं है. हेल्दी टू ईट एलिमिनेट हो गया. नेक्स्ट, मेक श्योर देयर चिल्ड्रन हैव इनफ मनी फॉर फूड. कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा क्योंकि स्कूल दे विच अनपेड फूड मिलते हैं. ठीक है, फिर भी आगे सुन लो. And there's no change to the current system of paying for lunches by topping up your child's electronic payment card online. You may be wondering what will happen to the की क्या उन्हें की प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स जिन्हों जिवें रिचार्ज करना आपा उदा ही पेरेंट्स ने रिचार्ज करना तो क्या उन्होंने मनी की लोड है? नो. नहीं, एलिमिनेट हो गया. आंसर पहले ही आपा लोग फर्स्ट लाइन में भी उन्हें दसता सी ये चीज है. ठीक है. 15
canteen. We'll still have tables and chairs in there, and pupils can eat food from the food hall or lunch they've brought from home. Eventually, we may use part of the canteen for storage, but first, we'll see how many pupils go in there at lunchtime. What does the speaker say about the existing canteen? Staff member, food will still be served there. Answer किया? ठीक है. Next page 34. Most of the question जेडे ने it is cover हो गए, right? अपने MCQs आगे, मैच इन्फॉर्मेशन आगे, जिन्होंने कहते हैं ऊपर टेबल बना होता है, नीचे ऑप्शन होंगे, मैच करने में आगे देख रहे हैं. मल्टीपल चॉइस आंसर जेडे वो वाले होंगे हैं, मल्टीपल आंसर MCQ वो भी आगे देख, ठीक है. सो सेम ध्यान नाल सुनना है. When you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Now listen and answer questions 16 to 20. Okay, back to the serving points in the food hall, which will all have side dishes, desserts, and drinks on sale, as well as main courses. One serving point we call World Adventures. This will serve a different country's cuisine each day. World Adventures Serving point है. की क्या है? Different cuisine, different region cuisine. ऑप्शंस जो देखो की मैच कर रहे हैं. D daily change in menu. ठीक है. Next street life. Maybe Chinese one day and Lebanese the next. The menus will be planned for a week at a time, so pupils will know what's going to be available the whole of that week. Street life is also international, with food from 3 particular cultures. We'll ask pupils to make suggestions, so perhaps sometime. ठीक है. Next. There'll be food from Thailand, Ethiopia, and Mexico. And then one of them will be replaced by Jamaican food for a week or 2. The speedy Italian serving point will cater particularly for the many pupils who don't eat meat or fish. They can be sure that all the... ठीक है. Got it? Next. Multiple answer MCQ. Food served there is suitable for them. There'll be plenty of variety, so they shouldn't get bored with the food. Okay, that's all on the new food hall. Now, after school lessons. These are very popular with pupils, particularly swimming. In fact, there's a waiting list for lessons. Cycling is another favourite, and I'm delighted that dozens of pupils make use of the chance to learn to ride in off-road conditions. It means that more and more cycle to and from school every day. As you know, we have a well-equipped performance centre, and we're going to start drama classes in there too. Pupils will be able to join in just for fun, or what? Question क्या है? New. ठीक है. एक
एक ऑप्शन वो बोल चुकी है। एक्टिंग किसने लगा दिया एक्टिंग? ड्रामा क्लासेस एक को बोली दोनों बोल गई। दोनों ही बोल रही है साइकिलिंग विद पर साइकिलिंग तो उन्हें क्या है कि ऑलरेडी साढ़े कोई ट्रैक्स नहीं, वो तो न्यू कोई चीज। स्विमिंग बोली एक्टिंग स्विमिंग एंड थिएटर दोबारा सुनते हैं। There is suitable for them. There'll be plenty of variety, so they shouldn't get bored with the food. Okay, that's all on the new food hall. Now, after school lessons. These are very popular with pupils, particularly swimming. In fact, there's a waiting list. जे स्विमिंग ऑलरेडी पॉपुलर है तो न्यू क्यों है? और एलिमिनेट कर दो। For lessons. Cycling is another favourite, and I'm delighted that dozens of pupils make use of the chance to अनदर फेवरेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। learn to ride in off-road conditions. It means that more and more cycle to and from school every day. As you know, we have a well-equipped performance centre, and we're going to start drama classes in there too. Pupils will be able to join in just for fun, or work up to taking part in a play. We hope to put on at least one a year. We already teach a number of pupils to use the sound and lighting systems in the centre. And a former pupil has given a magnificent grand piano to the school. So a few pupils will be able to learn at the school. Got it? सारे क्वेश्चन कवर हो गए ना? पार्ट 4 रह गया, राइट? है ना? क्योंकि मेजरली पार्ट 3 में मिक्सअप ही होता है ना क्वेश्चन का, ठीक है? सो फॉर पार्ट 4 ओपन पेज नंबर 16. No talking. Culprit. Part 4, always blank. Any words be? one word Any number? Never. ठीक है? जेडे आंसर्स होंगे ना मोस्टली सब तो ज्यादा थोड़े का एडजेक्टिव रियल वर्ब्स, ठीक है? रीडिंग वाली या ट्रिक्स ऑलवेज वर्क हियर ए वाले सेक्शन में. ठीक है, सेम अपन लगाने हैं रीडिंग किमें देखो 31 ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਾ?
की है आर्टिकल 32nd 33rd मोर चलो ओ अपन एक्सेप्शनल केस मान लेते हैं ठीक है ओनली का मतलब क्या हो गया बी की है टू बी टू preposition and conjunction लगी है ना 37 ना लैंड तो ब्लैंक शुरू है ना 38 टू टच तो पहला वाला वर्ड ब्लैंक है दिख रही ना अभी पीछे कितने भी preposition conjunction articles ठीक है ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 35 ਜਾਂ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੌਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 35th ਜਾਂ 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ ਆਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ क्वेश्चन की है we imagine someone like a dash knitting कि किसी ऐसे पर्सन को इमेजिन कर सकते हैं knitting करते हुए जो कि किसी तरह like resemblance ठीक है Part 4. You will hear a lecturer on a fashion design course introducing the subject of hand knitting, which involves making things like woolen jumpers and scarves. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good morning, everyone. So today we're going to look at an important creative activity, and that's hand knitting. Ancient knitted garments have been found in many different countries, showing that knitting is a global activity with a long history. When someone says the word knitting, we might well picture an elderly person, a grandmother perhaps, sitting by the fire, knitting garments for themselves or other members of the family. It's a homely image, but one that may lead you to feel that knitting is an activity of the past. And indeed, during the previous decade, it was one of the skills that was predicted to vanish from everyday life. For although humans have sewn and knitted their own clothing for a very long time, many of these craft-based skills went into decline when industrial machines took over, mainly because they were no longer passed down from one generation to another. However, that's all changing, and interest in knitting classes in many countries is actually rising, as more and more people are seeking formal instruction in the skill. With that trend, we're also seeing an increase in the sales figures for knitting equipment. So, why do people want to be taught to knit at a time when a machine can readily do the job for them? The answer is that knitting as a handicraft has numerous benefits
for those doing it. Let's consider what some of these might be. While many people knitted garments in the past because they couldn't afford to buy clothes, it's still true today that knitting can be helpful if you're experiencing economic hardship. If you have several children who all need warm winter clothes, knitting may save you a lot of money. And the results of knitting your own clothes can be very rewarding, even though the skills you need to get going are really quite basic, and the financial outlay is minimal. But the more significant benefits in today's world are to do with well-being. In a world where it's estimated that we spend up to 9 hours a day online, doing something with our hands that is craft-based makes us feel good. It releases us from the stress of a technological, fast-paced life. Now, let's look back a bit to early knitting activities. In fact, no one really knows when knitting first began. But archaeological remains have disclosed plenty of information for us to think about. One of the interesting things about knitting is that the earliest pieces of clothing that have been found suggest that most of the items produced were round rather than flat. Discoveries from the 3rd and 4th centuries in Egypt show that things like socks and gloves that were needed to keep hands and feet warm were knitted in one piece using 4 or 5 needles. That's very different from most knitting patterns today, which only require 2. What's more, the very first needles people used were hand-carved out of wood and other natural materials, like bone, whereas today's needles are largely made of steel or plastic and make that characteristic clicking sound when someone's using them. Ancient people knitted using yarns made from linen, hemp, cotton, and wool, and these were often very rough on the skin. The spinning wheel, which allowed people to make finer yarns and produce much greater quantities of them, led to the dominance of wool in the knitting industry, often favoured for its warmth. Another interesting fact about knitting is that because it was practiced in so many parts of the world, for so many purposes, regional differences in style developed. This visual identity has allowed researchers to match bits of knitted clothing that have been unearthed over time to the region from which the wearer came, or the job that he or she did. As I've mentioned, knitting offered people from poor communities a way of making extra money while doing other tasks. For many centuries, it seems, men, women, and children took every opportunity to knit, for example, while watching over sheep, walking to market, or riding in boats. So, let's move on. Grandmother. Second, Decade. third, fourth, fifth, sixth, now seventh, eighth, ninth, last. Done. लास्ट तक ही है Sheep.